What's up guys, Jason Thomas here and welcome to the food production. I hope you all are doing well. So let's beat this garmi with refreshing and homemade Aam Panna and Kokum Sharbat. So let's get started. कोकम ऐड करने के बाद उसमें 2 कप गर्म पानी डालिए और कम से कम 1 घंटे के लिए सोख होने दीजिए। अब ये सोख कोकम को ब्लेंडर में डाल के एक प्रॉपर प्यूरे बनाते हैं। अब एक सॉसपैन में शक्कर और पानी इक्वल रेशियो में ऐड करके उसमें वो कोकम का प्यूरे ऐड करें। अब ये मिक्सचर को स्ट्रेन करके बोतल में अच्छे से स्टोर करिए। एंड नाउ फॉर आम पन्ना। 2 कच्चे आम को पानी में तब तक बॉईल करिए जब तक वो कम्प्लीटली सॉफ्ट ना हो। अब उसे ठंडा करके उसका सारा पल्प एक बाउल में स्क्रैप करके निकालें। नाउ ऐड एवरीथिंग टू द ब्लेंडर और उसका एक अच्छा सा प्यूरी बना दीजिए। अगर समझो वो थोड़ा थिक लगे तो उसमें थोड़ा और पानी डाल के उसको थोड़ा लूज कर सकते हैं। अब एक बॉटल में इसे पोर करके फ्रिज में 1 महीने के लिए अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब एक ग्लास में ऐड सम आइस एंड 30 ml कोकम सिरप, ऐड सम मिल्क टू इट एंड टॉप इट अप विद वाटर और सोडा। You can also add some sabja to it. टेक अनदर ग्लास और ऐड करिए थोड़ा आइस और 45 ml ऑफ आम पन्ना एंड टॉप इट अप विथ वाटर और सोडा। Enjoy these refreshing drinks with your friends and family. If like this video, do like, share and subscribe. Chef Jason Thomas signing off. Thank you.